So HOD sir was on leave, so therefore we couldn't discuss it. So today we will discuss, and again tomorrow is Ekadashi. So most probably from Wednesday onwards, what are the things, whether we'll start it or not, it all depends on HOD's decision. That we will decide today. That we will decide today. Got it? Got the things? Okay. So let me start now. So today a very important topic I am going to start. It's very lengthy, and for this derivation you refer Punmiya book. Derivation is very, I mean, in difficult matter. I try to make it in simplified way also. मैंने उसको simplified way में किया है. कितना detail हो सके उतना मैं आपको बताऊंगा. But even then also, after doing, so what you have to do now is you have to go through the book also to try to understand this derivation. And in this chapter, this is the only thing. स्क्रीन अभी नहीं रखा बेटा, मैं स्क्रीन अभी बता नहीं, अभी बातें कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. आई विल पुट द स्क्रीन, डोंट वरी. So this is the screen. So what I was telling is, so what I was telling that this topic is very important in this chapter. Okay, if you learn this one means, तुम लोग जल्दी नहीं आते, देखो तुमको एडमिट करने में मुझे 10-15 मिनट निकल जाते. Okay, so today what I was going to derive is that's the very important topic, that is Terzki's analysis. Terzki's analysis और Terzki's का जो formula है, derivation बहुत important है, और based almost all 90% chapter आपके syllabus को इसी पे based है. Is based on this derivation only. So this derivation is very important. I will go in detail. कोई गड़बड़ नहीं, आज नहीं हुआ तो ठीक है, आधा जितना भी आपको समझ में आना चाहिए, डिटेल में अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. And you do it yourself after doing. And for this, please refer. Again, I will tell you, for this derivation, you refer B.C. Punmiya's book. You refer B.C. Punmiya's book. Got it? So now coming to the derivation. So before this, what I taught you, please go through it. If you were absent or if you didn't understand, when I put the notes, you can follow it and you do it. What we did is, what is foundation engineering? What are the different types of foundation engineering? And what are criteria to select a good foundation? Okay. And then what we did is, what is footing? Then what is foundation? What is foundation soil? What is bearing capacity? Okay, what is bearing capacity? What is gross pressure intensity? What is a net pressure intensity? Gross pressure intensity, net pressure intensity, ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity, then safe bearing capacity, net safe bearing capacity. इतनी चीजें, अलोएबल बेरिंग प्रेशर, इतनी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिटेल में बता चुका हूं. You go through it. If you are even not following, you ask me. After this, as I told you, the soil fails in two types here. Either it fails in shear, or it fails in foundation, or it fails in settlement, in foundation, in settlement. तो shear failure से दोनों भी allow कर रहा, तो it is called allowable pressure. That also I told you. And in shear failure, there are three types. In shear failure, there are three types. One is general shear failure. Second is local shear failure. Third is general shear failure, local shear failure, and then it is punched shear failure. ये डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ मैं. प्लीज you go through it. You go through it and you can understand that. Got it? Now today I will start the next very important topic, that is Terzki's analysis. It is
Terzki's analysis. What is Terzki's analysis? What are the assumptions to be made here? Okay. After the assumption, what you have to see is what are the limitations of this theorem, and then you draw a diagram, you draw the pressure diagram, and you resolve the forces, find out what are the downward forces, find out what are the upward forces, then equal upward forces is equal to downward forces, then you equal upward forces is equal to downward forces, upward forces is equal to downward forces. Got it? So this much you have to do, this much you have to do. I hope you understood the things well now. Okay, so now let me start the derivation. Let me start the derivation. First of all, we should go for assumptions. What are the assumptions we make here? What are the assumptions we make here in Terzki's analysis? Okay, so what are the assumptions we make here? Let me, लोग बहुत आराम से आते रहते, चुप डिस्टर्ब करते. Okay, so Terzki was the देखो देखो Terzki was the first to propose a comprehensive theory for evaluating the safe bearing capacity of shallow foundation with rough base. Shallow foundation with rough base. So these are the assumptions you have to make in Terzki's analysis. These are the assumptions you have to make in Terzki's analysis. What is the first assumption? So this is very important. See, understanding is different thing from the examination point of view. Remembering something is different. So from the examination point of view, these assumptions and limitations are very important. Rarely he asks derivation, but understanding of derivation from the subject point of is very important. Subject point of view is very, very, very important. Got it? So now, first of all, you should know what are the different assumptions to be made. What are the different assumptions that are made while deriving the derivation. So you take down one by one. First is soil is homogeneous and isotropic. This is the common assumptions you make in all the strength of theory of bending, torsion, everywhere. You assume the same thing. There also you assume material is homogeneous and isotropic. Homogeneous means made up of same material. ऐसा नहीं आधा एक मटेरियल आधा एक मटेरियल, ऐसा है नहीं. हम क्या मान के चलते हैं, हम सॉइल में वेराइटीज भी अगर से होंगे, सॉइल में अगर से वेराइटीज भी है, इवन देन आल्सो व्हाट वी अज्यूम दैट सॉइल इज होमोजीनियस. Soil is homogeneous. And second is isotropic. Isotropic in the sense it is having elastic, equal elastic properties in all the directions. It is having equal elastic properties in all the directions. Soil is homogeneous and isotropic. Soil is homogeneous and isotropic. Isotropic. Got it? This is the first assumption. Soil is homogeneous and isotropic. Second, the shear strength of soil is represented by Mohr's Coulomb's criteria. Of course, this you have studied in shear strength chapter, that any shear strength is represented by Mohr's Coulomb criteria. That is tau is equal to sigma plus c tan phi. That is the formula, you did it. So based on that one only, any shear strength is represented. The footing is of strip footing type with a rough base. It is essentially a two-dimensional plane strain problem. So what we assume, third assumption means we are assuming a strip footing. Strip footing kya rehta? When I teach you shallow foundation, you will come to know what is the strip footing. So strip footing is a long footing. So we assume that this footing, why we have assumed that means a maximum length you will get. So when length is more means a clear shear failure surface will be there. That is why, what is the first assumption we make here is the footing is of strip footing type with dimensional, with rough base. Base is rough. Of course, if the base is smooth means again there is a settlement will be there. So you cannot develop the full settle. I mean this full failure surface. So if the rough is smooth means again it is going to be punched shear failure. When it is punched shear failure means वहाँ पर failure surface fully develop नहीं होते.
और जब फेल्योर सरफेस फुल्ली डेवलप नहीं होते तो आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या मान के चलते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट अज्यूमशन, आवर नेक्स्ट अज्यूमशन इज द बेस इज रफ, the base is rough, the footing is of strip type, the strip footing type with rough base, the base is rough, got it? And it is we are considering only two dimension system only, thickness we are taking as one only, thickness we are taking one, and we are taking uh, two dimension only. Next one, elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to phi of the horizontal. This is a very important assumption. See, as I told you, whenever a footing is there, I have shown you figure, there will be one elastic zone, isn't it? There will be one elastic zone, and that elastic zone is triangular. That elastic zone is triangular. I showed you. हर फेल्योर में आपको बताया मैं, पहला जो रहता वो ट्रायंगुलर रहता. सो इलास्टिक जोन हैज elastic zone has straight boundaries. Elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to phi to the horizontal failure zone is not extended about the failure line. मतलब क्या है मालूम है, अभी आते रहते तुम लोग, और देखो अब मतलब क्या है, इलास्टिक जोन जो है उसका अगर से एक्सटेंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता मालूम है, उसको हम साई बोलते, लेकिन दैट साई इज आल्सो इक्वल टू फाई. देन व्हाट इज फाई? फाई इज एंगल ऑफ shearing resistance. What is that inclination is there, no? That inclination is equal to phi. That inclination is equal to phi. So what it says that elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to phi to the horizontal, equal to the horizontal. Next, failure zone is not extended above Sir, repeat fourth one, please. फोर्थ वन. ओके, व्हाट इट सेज दैट इलास्टिक जोन, चलो मैं आपको फिगर बताता हूं पहले एक बार, फिर मालूम होता आपको. मैं आपको क्या बोला था, ये फुटिंग है बेटा, तो ये जो है पहले क्या होता मालूम है, सॉइल में प्रेशर सॉइल का पोर्स लेते, पोर्स के बाद सॉइल लेता, सॉइल लेने के बाद सॉइल का सॉलिड पोर्शन, तो एक इलास्टिक जोन डेवलप होता, और ये इलास्टिक जोन रहता ट्रायंगुलर. इलास्टिक जोन कैसा रहता, ट्रायंगुलर रहता, ये सारा लोड पहले रहता. तो ये जो एक्सटेंड होता ना, तो ये जो एक्सटेंड होता, ये जो एंगल बनाता हॉरिजॉन्टल के साथ, हम क्या जूम करते, दिस एंगल इज, दैट इज एंगल वी टेक दिस एज साई, बट दिस एंगल इज इक्वल टू फाई. मतलब एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस का जो एंगल है वही एंगल इलास्टिक जोन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता. दिस वी मेक assumption. This we make assumption. Got the idea? So this is the elastic zone, and this makes the angle psi equal to phi. Psi equal to phi. So this is the thing. That's the fourth assumption. Elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to the phi to the horizontal failure zone. हो गया. हाँ, उसके बाद next. Failure zone is not extended above beyond the base of the footing. Failure zone is not extended above beyond the base of the footing. Shear resistance of soil above the base of the footing is, shear resistance of the soil above the base of the footing is neglected. मतलब failure zone है वो हमारे base of the footing से ज्यादा, मतलब base जो footing का है वहां पर neglect करते हैं. Failure zone is not extended above the base of the footing, and shear resistance of the soil above the base of the footing is neglected. Next is method of superposition is valued. Method of superposition in the sense a plus b is equal to c plus d, मतलब प्लस माइनस सब यहाँ पर assumptions होते, ये हम मान के चलते. हाँ, उसके बाद देखिए दो एक टाइप का प्रेशर आता है इसमें, पैसिव प्रेशर. एक्टिव प्रेशर क्या है, पैसिव प्रेशर क्या है. देखिए जब सॉइल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता, जो सॉइल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता, इट इज कॉल्ड एक्टिव प्रेशर, मालूम है आपको. और जब वॉल सॉइल के ऊपर तरफ इधर मुड़ता तो इट इज कॉल्ड पैसिव प्रेशर. तो यहां पर पैसिव प्रेशर डेवलप होता, जो फुटिंग है वो सॉइल के ऊपर वजन डालता, सॉइल के ऊपर प्रेशर करता, सो पैसिव प्रेशर डेवलप होता. और पैसिव प्रेशर के हम लोग क्या मान के चलते, पैसिव प्रेशर फोर्स हैज 3 कंपोनेंट्स. पैसिव प्रेशर के 3 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, एक कोहेजन,
एक सरचार्ज और तीसरा वेट ऑफ शियर जोन। तो पैसिव प्रेशर किसकी वजह से होता? तीन चीजों की वजह से होता, और वो तीनों चीजें मैं डिराइवेशन में बताऊंगा आपको। एक कोहेजन है, दूसरा सरचार्ज मतलब ऊपर का जो लोड आ रहा, और तीसरा शियर जोन का वेट क्या है, ये हम मान के चल रहे। एंड नेक्स्ट अजम्पशन इज इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नेग्लेक्टेड हियर। हम वाटर टेबल को कंसीडर नहीं कर रहे। वाटर टेबल को जब हम कंसीडर करते तो उस वक्त एक और फॉर्मूला है, वो डेरिवेशन हम बाद में करेंगे। तो यहां पर फिलहाल हम हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग वाटर टेबल। हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग वाटर टेबल। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नेग्लेक्टेड हियर। Next, footing carries concentric and vertical loads. Of course, we consider it as concentric load, means acting at a single point load, and act it as vertical, not as UDL we are taking. The whole footing is taken as a point load here. The whole footing is taken as a point load here. Footing and ground are horizontal. Of course, footing and ground are horizontal. Then the properties of foundation soil do not change the shear failure. Do not change the shear failure. Okay, so these are the important, especially the last two are not that much important, but starting things are very much important. So प्लीज गो थ्रू। बुक में आपको कम मिलेंगे, मैं इधर उधर के ढूंढ ढूंढ के पूरे आपको 11 अज्यूमशन बना के दिया हूँ। 11 अज्यूमशन बना के दिया हूँ। दीज अज्यूमशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत थोड़ा बहुत, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट, यू नीड नॉट वरी, बिकॉज व्हेन यू डिराइव द थिंग अगेन, आई विल आफ्टर डेरिवेशंस वंस अगेन आई विल टीच दिस वन। सो दैट अब आपको डेरिवेशन करने से पहले बता रहा हूं, फिर डेरिवेशन करने के बाद भी बताऊंगा। जैसा कि पैसिव प्रेशर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये आपको इस वक्त मुश्किल लगता, ये पैसिव प्रेशर है क्या, ये कैसा कर रहे हम, आपको कुछ मालूम नहीं होता। बट द थिंग इज when I repeat the things, when I take the derivation, and after derivation when I come here, so then the things will be easy. Then the things will be easy. Once again I will repeat this. So once again I read just soil is homogeneous and isotropic. Good. It is very easy, so no need of any explanation. The shear strength of soil is represented by Mohr's Coulomb's equation, means it follows Mohr's Coulomb criteria. Okay. The footing is stiff footing and it is having rough a base and it is two-dimensional. This is the third assumption you have to make. The footing is of stiff footing type with a rough base. It is essentially a two-dimensional plane strain problem. Then उसके बाद हम क्या assume करते हैं? Elastic zone has straight boundaries inclined at an angle equal to the phi to the horizontal. Elastic zone has straight boundaries. This is facing problem. हाँ, इलास्टिक जोन कैसा है? जो ट्रायंगुलर जोन है ना, वो जब एक्सटेंड करते हम, वो एंगल कितना बनता? फाई बनता। ये सब आपको डेरिवेशन के बाद मालूम होते जाते। ओके, देन failure zone is not extended above beyond the base of the footing. Beyond the base of the footing, shear resistance of soil above the base of the footing is neglected. Then superposition is valued. उसके बाद मैं आपको बताया पैसिव प्रेशर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है कोहेजन, दूसरा है सरचार्ज, और तीसरा है वेट ऑफ शियर जोन। वेट ऑफ शियर जोन। और यहां पर इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज टोटली नेग्लेक्टेड। Effect of water table is neglected here. Water table effect is not considered here. उसके बाद footing carries concentric and vertical loads. Footing carries concentric and vertical loads. Then footing and ground level are horizontal, and then properties of foundation soil do not change the during the shear failure. मतलब soil के property change नहीं होते। जब shear failure होता, जो basic properties रहते वो सभी same रहते। So these are the assumptions. So once again I repeat you, today I started Terzki's analysis, a very 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 important analysis. And in Terzki's analysis, you have to make certain assumptions. You have to make certain assumptions, and I told you those assumptions. I told you those assumptions, and I hope all the assumptions are very much clear. And remember, after the derivation, once again I will teach you all these assumptions so that things can be easier for you. So that things can be easier for you. Things can be easier for you. Then limitations.
व्हाट आर द लिमिटेशंस हियर, व्हाट आर लिमिटेशंस, ये भी मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो इसके लिमिटेशंस क्या है, शायद आपको थोड़ा इस वक्त मालूम भी नहीं हो जाए, लेकिन slowly will come across. The theory is applicable to shallow foundations. For deep foundations, this theory is not applicable. The Terzki's theory is applicable only for shallow foundations. So you may ask, sir, if the foundation is deep, so how to find the bearing capacity? Of course, for shallow foundation, is okay. But when the foundation is deep, so some other different formulas are there. Some other different formulas are there. You have to go for that one. Okay, so next, as the soil compresses, phi interact, which is not considered, hence as the phi soil compresses, of course, when footing load is compressed means soil compresses, and when soil is compressed, phi increases, which is not considered, hence fully plastic zone may not develop at the assumed phi. तो हम लोग क्या करते हैं, जब soil compress हो रहा, phi का वैल्यू इंक्रीज होता, उसको हम कंसिडर नहीं करते। ए भी एक इसकी गलती है, ए भी एक इसकी लिमिटेशंस है। और all points need not experience limit equilibrium condition at different loads. सभी points पे limit equilibrium आता है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और method of superposition is not acceptable in plastic conditions as the ground is near failure zone. और हम method of superposition applicable होता मान के चल रहे, but it is also not acceptable as the plastic conditions are near to the ground level, So these are the limitations and assumptions. So you may find it difficult now to assume, I mean, understand the assumptions and limitations very much. But once when I do the derivations, you will come across again all these things. Okay, so that easy होता आपको। अब हम आएंगे Terzki's analysis पे। So Terzki's analysis के बाद देखिए, अब ये है आपका ग्राउंड लेवल, समझ में आ रहा है? ये है आपका फिगर, देख लो पहले फिगर को अच्छी तरह समझो। ये है आपका ग्राउंड लेवल और ये है ग्राउंड में फुटिंग। ये ग्राउंड में क्या है, फुटिंग है। और फुटिंग में इसके ऊपर विड्थ कितना है फुटिंग का, वी आर अज्यूमिंग दैट इट्स विड्थ इज बी। its width is B. This much the things you should know. A footing is there whose width is B. And a total QF is there, that is the gross pressure intensity. Whatever the total pressure is acting, that is QF. मालूम है क्या बार? और ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल में एक फुटिंग है, फुटिंग का विड्थ B है, और यहां पर एक टोटल ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी आ रहा, एंड दिस इज गोइंग टू बी QF। एज आई टोल्ड अर्लियर, जब भी फुटिंग का लोड सॉइल पर आता, अभी ये सब फाउंडेशन ही है, जहां से ये ग्राउंड लेवल के नीचे सब फाउंडेशन है, हम फुटिंग के नीचे फेल्यूर सरफेस अज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये फिगर अच्छी तरह याद रखो आप, जैसे ही आपका लोड यहां पर डेवलप हो रहा, सबसे पहले एक इलास्टिक जोन तैयार होता, एक ट्रायंगुलर शेप का रहता, याद रखो ये एग्जैक्टली ट्रायंगुलर नहीं रहता, ट्रायंगुलर साइज का रहता एक्चुअल फील्ड में, लेकिन रिसर्च के वर्क के लिए या डेरिवेशन करने के लिए हम लोग क्या मान के चलते, दिस इज ट्रायंगुलर वन, एंड रिमेंबर दिस वन इज elastic zone. This entire thing is elastic zone. तो एक बार और मैं बताता हूं आपको, एक फुटिंग है, ग्राउंड लेवल से नीचे है, और फुटिंग का विड्थ है B, और फुटिंग के इमीडिएट नीचे व्हेनेवर Q ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, आपका टोटल प्रेशर बढ़ता है, सो एक इलास्टिक जोन फॉलो होता है। तो इलास्टिक जोन ए ट्रायंगुलर फॉलो होता है, ट्रायंगुलर इलास्टिक जोन फॉलो होता है। गॉट इट? यहां तक मालूम है, क्लियर है आपको?
और इसके ए जो साइड्स है, ये डी है, ए बी और ए डी, डी ए और डी बी, ये दो क्या है, इसके साइड्स है, किसके, इलास्टिक जोन की। और ये जो एंगल बनाते हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल साई बनाते, और ये जो साई है ये किसके बराबर है, ये फाई के बराबर है। ये हम अज्यूमशन कर चुके हैं। इलास्टिक जोन हैज एन एंगल इक्वल टू साई इक्वल टू फाई, psi equal to phi. I hope now things are very much clear up to here. एक एक चीजें आराम से, चलो डेरिवेशन बहुत लेंदी है, आज एक पीरियड में होना मुश्किल है, अगर से गड़बड़ करे तो हो जाता है, मुझे गड़बड़ नहीं करना है, आपको हर स्टेप क्लियरली समझ में आना चाहिए। सो नाउ दिस इज अ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में एक फुटिंग रहता, आपको मालूम है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो रहता वो क्या रहता, सुपर स्ट्रक्चर रहता, वो सुपर स्ट्रक्चर रहता। सो बिलो द फुटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर QF इंक्रीजेस, whenever QF increases, so when QF increases, so automatically what happens, so there will be pressure on the soil immediately below the foundation, and this behaves as an elastic zone. Its side is, it is triangular one, and its sides make an angle psi equal to phi to the horizontal, psi equal to phi to the horizontal. Figure shows a footing of width B and subjected to load intensity QF to cause failure. So ये figure shows a footing of width B and subjected to a load intensity QF to cause failure. मतलब QF की वजह से ये failure होता। The footing is shallow. Of course, if it is shallow, then only we can derive, because we have made the assumption in the Terzki's analysis that the foundation is shallow. So what we assume that the footing is shallow. That is, depth D of the footing is equal to or less than width B. So what is meant by shallow? Shallow means जो depth है इस footing का वो या तो B के बराबर है या B से कम है, B से कम है। The footing is shallow, that is the depth D of the footing is equal to or less than width B of the footing. Width B of the footing. Also the footing is continuous, that is the stiff footing. This I will show when I teach you shallow foundation. If strip क्या होता है, लंबा लेंथी रहता, तो यहाँ कंडीशन क्या है, length of the footing is greater than 5 times the width. मतलब ऐसा लेंथी रहता, लेंथ किधर रहता मालूम है, ये अगर से ब्रेड्थ है तो ये ऐसा लेंथ रहता, परपेंडिकुलर टू पेपर, परपेंडिकुलर टू पेपर रहता। Okay, so things are clear now. Once again I will repeat the things again and again. This is a footing, its width is B, it carries a gross pressure intensity Q and QF, and because of this, and one more thing, we assume that the footing is shallow. Of course, the footing is shallow, and above that it is strip footing. Shallow means depth of the footing is less than or equal to width of the footing. Depth of the footing is less than or equal to width of the footing. Width of the footing. So now next thing is what he says, that the footing is continuous. The footing is continuous. Okay, continuous in the sense, what is the condition? Length should be greater than or equal to 5b. 5b, 5 times the width of the footing से भी length ज़्यादा रहना. Got it? So I think these things are very much clear to you. ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ से जो वॉल है आपका, ये फुटिंग बनता नीचे फाउंडेशन के नीचे आके, और इस फुटिंग का विड्थ है बी, और ये फुटिंग है शालो. शालो फाउंडेशन उसको बोलते हैं जिसका डेप्थ ब्रेड्थ से कम रहता या इक्वल रहता, या तो इक्वल रहता. Okay, then total gross intensity is QF, and we assume that this is a strip footing. But we assume that the footing is strip footing. The footing is called strip,
when the length is greater than or equal to 5 times the b. Length is greater than or equal to 5 times the b. 5 times the b. ओके गॉट इट. सो इतना रहने दो, अब बंद होता, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो, जरूरी है, 2 घंटे का क्लास है. 5 मिनट्स एग्जैक्टली, आफ्टर 5 मिनट्स आई विल स्टार्ट. तो इतना एज्यूम्पशन से आप देख लो, आज लिमिटेशंस क्या है देख लो तेर्स गेज एनालिसिस के. उसके बाद ये फिगर अभी मैं स्टार्ट किया हूं, थोड़ा एक्सप्लेन किया हूं, यू गो थ्रू इट फिगर. आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट पोर्शन.